Hello everyone, welcome to our channel जहाँ पे होती है आपकी preparation 50% faster. This is Anjali Pratap, and in this particular session, I think you all have definitely understood from the title of the video itself that we are going to understand or basically avoid those mistakes which can be actually fatal to our entire preparation, right? So in this session we are going to talk about the best tips, the strategies, or basically the very important insights in order to ace our IBPS A4 exam. So we are also going to understand the different mistakes which can actually save us the time, effort, and frustration. Okay, so let's grab your uh, notebook and let's get started, everybody. Let's talk about the very first mistake which generally students do. The first one is ignoring the exam pattern and syllabus. Guys, before starting preparation we need to understand कि exam की क्या demand है. Many students waste their time studying irrelevant topics जो शायद syllabus में है भी नहीं या मे बी उसका उतना weightage भी नहीं है. Always remember, it's a very nice idea to refer to any previous year paper अगर आप refer करें, so this will give you the exact area, the exact weightage from which you can score maximum marks in the exam. The second mistake which generally students do is they skip mock test. देखो, skipping mock test is like going into a battle without practice. मतलब आपको पता है कि आपको जंग में जानी है, बट आपने ना अपनी तलवार धार की, ना आपने अपने किसी भी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम किया. आपने अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है आपके इंटायर फाइट का, उसे ही आपने इग्नोर कर दिया. सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट दैट मॉक टेस्ट आर योर secret weapon. Okay, they help you understand the exam pattern, manage time, identify your weak areas. Okay, so as soon as you start your preparation, it's very important that you take timely mock test and analyze them well ताकि आपकी जो consistent improvement है वो आपको पता चलती रहे. The third mistake is overlooking weak areas. See, it's a very nice thing to identify your strong areas, बट वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद वी जस्ट ओवरलुक इट, हम उसे छोड़ देते हैं, ये काम नहीं करना है. ठीक है, हमें बिल्कुल भी completely नेग्लेक्ट नहीं करना है स्टूडेंट्स, बिकॉज वी डोंट नो दैट मे बी द टॉपिक्स विच वेर योर स्ट्रेंथ, अगर उसमें से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए सो इट विल बी अ वेरी वेरी लाइक फैटल थिंग अगेन एज आई से. एग्ज़ाम में वो सुसाइड टाइप का हो जाएगा, इजंट इट? सो इट्स अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक एवरीबडी. वीक एरियाज कैन ड्रैग डाउन योर ओवरऑल स्कोर. तो ध्यान रखिए. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ही देती हूँ यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन का. ठीक है, सो यू नो दैट इंग्लिश सेक्शन इज़ अ वीक एरिया एंड मे बी लेट्स से योर क्वांट और मे बी रीजनिंग इज़ a good one, but maybe certain questions came in the exam जो थोड़ा tricky हो गया, थोड़ा puzzle आ गया जो आपसे नहीं बना. So this might be your savior at that time, right? So spend करो थोड़ा सा extra time in mastering your grammar, comprehension, vocabulary, क्योंकि हर एक mark वहाँ पे count होता है, right? Next mistake which we generally do is not revising regularly, everyone. See, if you don't revise, you will forget. Regular revising is something is always going to be a key to retain your information, whatever important information which you maybe you have thought that you are going to remember that, but maybe it might have slipped from your mind, right? So schedule some dedicated revision slots in your timetable. Revise topics weekly. I'm not saying that you have to do it like every single day, but yes, you can always dedicate certain time for the same. यूज़ फ्लैश कार्ड्स, नोट्स कर सकते हैं, माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा फ्रेश रहे. Last but not the least, everybody, overloading yourself with too many resources. Yes, and in I think in this particular age, this has become a very very actually a headache for lots of aspirants, क्योंकि इतनी ज़्यादा information है और हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम किस पे reliable हों, किस पे ना हों, isn't it? So always remember students that even if you are referring only two videos or one book at a time, please understand that quality is always going to dominate over quantity. So don't overwhelm yourself with too many books or online resources. Stick to the one which you trust.
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो आप उन बुक्स को प्रायोरिटाइज करो मे बी जो आपके लिए ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन या वोकेबलरी को जो है ना वो और इफेक्टिव बनाए, डिपेंडिंग ऑन कि विच ओवर एरियाज आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है उसे ठीक करने की, राइट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस इंटायर एजेंडा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है, बट I would like to end this video with a very important quote which I have brought for all of you guys. Is the difference between an ordinary and an extraordinary is that little extra. So this was the little extra which I have tried to put in into your preparation. बस ये छोटी सी एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप कर ले तो आप खुद ही उस भीड़ से अलग हो जाएंगे, right? So that's it for today's video, everyone. Avoiding these mistakes can help you, or let's say it will ultimately give you a significant edge in the IBPS AFO preparation. आज के लिए इतना ही रखते हैं. Feel free to drop your questions and feedback in the comments below. See you in the next video, everybody. Happy studying and good luck.